24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, honorable teacher. I welcome you on behalf of the SNOWMAN Publishers. This tutorial session is on Unit 5 of English Grade 3. The unit title is Good Morning. Let's have a look at the students' learning outcomes. After completing this unit, students will be able to predict a poem by looking at the given pictures. Comprehend simple questions related to the given pictures. Read the poem aloud in the class. Respond to the text post-reading to express how they take the poem. Comprehend and respond to simple questions. Pronounce short vowel sounds and pair of words, for example, E-A, O-U, U-I. Recognize and identify the short vowel sounds and pairs of words, that is, E-A, O-U, and U-I. Use appropriate expressions in conversation to articulate, recognize, and express feelings and achievements. Creatively comprehend the text from the book and pen down it in their own words. Use short vowel words in sentence making. Classify, pronounce, and practice short vowel sounds and pairs of E-A, O-U, U-I. Enhance the vocabulary with the words, long and short vowel sounds from the text. Recognize specific parts of words, including common inflectional endings. Honorable teacher, let me explain what inflectional endings mean. This means change in the form of the word to show difference in meaning. Inflectional endings. For example, let's take the word used earlier in the SLOs. Transition is the word, and if we make another word from transition, that is transitional, so this AL sound, transitional, will be inflectional ending of the word transitional, that is made from transition. Write the short vowel words and pair with E-A, O-U, U-I sound. Identify and recognize the similar words and sounds. Identify and differentiate between countable and uncountable nouns. Recall changing number of simple naming words by adding and removing S and ES. Identify and change the number of nouns by adding IES and ES after words ending in Y, O, etc. Change the number of irregular nouns. Classify and change the gender of nouns from immediate and extended environment, masculine, feminine, neuter. Identify the short vowel pairs of words from the poem. And finally, describe a picture in their own words. Before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the poem, whereas you should always keep trying to create and construct your own. The following introduction is suggested. Ask the students the following questions. What do the Muslims say when they see each other in the morning? Well, the answer obviously is Assalamu alaikum. What do people say in English when they see each other in the morning? Honorable teacher, इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजी बोलते हुए सुबह सबसे पहले हम क्या कहते हैं, तो मुसलमान तो फिर भी अस्सलाम वालेकुम कहेंगे. ये सवाल ऐसे होना चाहिए एक्चुअली कि English speaking people, what do English speaking people say? Obviously in English when they see each other in the morning. Well, they say good morning.
What is the time span of morning? یہ میں نے اضافی سوال مطلب اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا، لیکن پھر بھی چونکہ ریلیٹڈ تھا اس لیے میں نے شامل کیا کہ واٹ از دا ٹائم اسپین آف مارننگ. آگے چل کے اس ٹیوٹوریل میں ٹائم اسپینس کی بھی بات کروں گا کہ مارننگ کیا ہے اور نون کیا ہے، آفٹرنون وغیرہ وغیرہ. بٹ مارننگ کا جہاں تک تعلق کہ پوچھے کہ صبح کب سے کب تک رہتی ہے، well it's from the time you wake up until 12 o'clock in the middle of the day. یہ morning time ہے سارا. Well now, tell the students that they are going to read a poem titled Good Morning. Read the text aloud to the children while they listen and read it silently along with you. I am going to read it out for you. Good morning. Good morning sky. Good morning sun. Good morning little winds that run. Good morning birds. Good morning trees and creeping grass and brownie bees. How did you find out it was day? Who told you night had gone away? I am wide awake. I am up now too. I'll be right out to play with you. Before we proceed further, honorable teacher, let me request you, آپ بچوں کو یہ بتائیں بھی اور ان کی پریکٹس بھی کروائیں کہ وہ پوئم کی طرح، میں اس سے پہلے بھی اس پر بات کر چکا ہوں لیکن یاد دہانی ضروری ہوتی ہے بات کا، کہ پوئم کو پوئم کی طرح پڑھا جائے. اب جیسے میں نے ابھی پوئم پڑھی، میں یہ تو نہیں کہتا کہ I have read it perfectly as a poem should be read، لیکن فرق تو تھا نا پروس کو پڑھنے میں اور پوئٹری. اب اس میں ایک تو ریدم بڑا ضروری ہے جس کو میں اردو میں سرتال کہتا ہوں، ایک فیلنگ آف میوزک آتی ہے. پھر انٹونیشن اس میں نثر کے مقابلے میں زیادہ ہے، یعنی اتار چڑھاؤ آواز. تو یہ باتیں، اور پھر آپ بچوں کو پریکٹس کروائیں، ان کو یہ بتاتے ہوئے کہ ریدم کو کیسے مینٹین کرنا ہے پوئم کو پڑھتے ہوئے. تو ان کو آپ پریکٹس کروائیں. They should read a poem really like a poem. Ask the children to take turns reading sections of the text, correct their pronunciations at appropriate timings, and drill them in pronouncing the words correctly. The following words would require special attention in terms of articulation. Morning, R को silent रखना है. Morning. Sky. اگین وہی بات میں بار بار کرتا ہوں کہ جن بچوں کو نہیں بتایا گیا، ابھی انہوں نے شروع کیا ہے انگریزی پڑھنا، وہ اسکائی کہہ دیتے ہیں، تو ان کو آپ نے بتانا بھی ہے، پریکٹس بھی کروانی ہے. اسکائی کہیں. لٹل، لٹل غلط ہو، لٹل. بلکہ یہاں میں ایک اور اس لحاظ سے ملتے جلتے لفظ کی مثال دینا چاہوں گا. ہم LISTEN کو لسن کہنے کے عادی، whereas the word is listen, listen. اسی طرح یہ little نہیں ہے، اس کا درست تلفظ ہے little, little. I am کی جگہ وہ دونوں words الگ الگ بولے جاتے ہیں. یہ شارٹ فارم ہے I am کی، سو یہ ذرا فاسٹ بولا جائے گا. I'm wide, wide نہیں wide، اور I'm کی طرح I'll، یہ بھی شارٹ فارم ہے I will. It's oral communication now. Ask the students to role play the dialogue. At page 60, SLOS number 8. عائشہ: السلام علیکم ماما. اب دیکھیے یہ فرق ہے. ویسے تو اکثر ڈائلاگس میں جو پہلا جملہ ہوتا ہے وہ ایک کریکٹر دوسرے کریکٹر کو ایڈریس کرتا ہے، اس کا نام لے کے کرتا ہے، لیکن کریکٹرز کے مطابق آپ کی جو انٹونیشن ہے. اب اگر ماما کی جگہ یہاں، یہ آپ بچوں کو بتائیے گا اس طرح کی بات، اگر یہاں پہلے جملے میں ماما کی جگہ عائشہ کی کوئی دوست ہو تو پھر وہ اتنا لمبا نہ کرتی جتنا لمبا ہم ماما کے لفظ کو کر رہے ہیں. عائشہ: السلام علیکم ماما. ماما: وعلیکم السلام. How was the day in the school? عائشہ: Oh mama, I won the prize in a painting competition today. Mama:
Wow, it's great. Congratulations. What was the competition about? Aisha. Thank you, Mama. It was about festivals. Mama. What did you draw? Aisha. I drew people celebrating Eid al-Fitr. Our principal said that I could become a great artist one day. Mama. Wonderful. Keep it up. I'm proud of you. It's vocabulary building now. Explain the meanings of words that you think may be difficult for the children. Some words and their meanings are being given here. Winds, air moving quickly. तेज हवाएं, सिर्फ विंड होती तो तेज हवा. विंड और हवा में यही फर्क है. एयर मामूल की हवा है, लेकिन विंड जब हवा तेज चल रही हो तो हम उसको विंड कहते हैं. Creeping, this is used as adjective. The word basically is creep, happening or moving gradually and not easily noticed. My pardon, यहाँ मुझे लिख देना चाहिए था, लेकिन अब आप वैसे सुनते हैं और याद रखें, बच्चों को बताएं कि क्रीप के मानी है रेंगना, रेंगना. और आपको मालूम है कि कोई कीड़ा मकोड़ा कैसे रेंगता है. बंदा भी रेंग सकता है, और बाकी तो छोड़ें, वक्त भी बाज़-औक़ात रेंगता है. पता भी नहीं चलता, वक्त गुजर रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता. और बाज़-औक़ात आप हो सकता है पढ़ें किसी नस्र पारे में, वक्त रेंग रहा था. Brownie, brown, wide awake, fully awake. मतलब एक तो होता है ना सोता जागता बंदा, जिसको उर्दू में कहते हैं, ना पूरा सोया हुआ है ना पूरा जाग रहा है. But when you say in English, wide awake, पूरी तरह जागा, fully awake. Up, now up के बहुत सारे इस्तेमाल हैं, but here in the text, up का मतलब है out of bed, बिस्तर से उठ गया. Right, immediately, without delay. ये टेक्स्ट में ये सेंस बनती है. I am short form of I am and I am short form of. Task the students to find and write in their textbooks the time span of the following parts of the day. ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में चूंकि बताया था कि आगे चल के हम बात करेंगे. ऑनरेबल टीचर, मैं चूंकि खुद एक वक्त था जब मैंने इस पर सोचा कि हम इस्तेमाल करते हैं ये जो वक्त के मुख्तलिफ मकाम, यानी मॉर्निंग, डॉन, नून, आफ्टरनून, डस्क, इवनिंग और इवन नाइट. नाइट इसमें शामिल नहीं है, बट वी विल बी टॉकिंग अबाउट. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना किसी जगह आप लिख के रख लें, क्योंकि एक जगह पर आपको ये वजाहतें नजर नहीं आएंगी. और ये मैंने आपके लिए इसलिए ये सारा कुछ लिख दिया कि आप बच्चों को एक दफा बता सकें, क्योंकि ये सवाल जहन में पैदा तो होता है ना कि यार वी टॉक सो मच ऑफ मॉर्निंग. मॉर्निंग कब शुरू होती है, कब खत्म. सो मॉर्निंग, द पार्ट ऑफ द डे फ्रॉम मिडनाइट टू मिड डे, यानी रात के 12 बजे के बाद से शुरू होती है मॉर्निंग. अब इसका मतलब क्या है? आप अगर रात के 12:30 बजे भी किसी से मिलते हैं तो आप उसको गुड मॉर्निंग ही कहेंगे. डॉन, ये लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, बट इट्स द टाइम ऑफ द डे व्हेन लाइट फर्स्ट अपीयर्स. डॉन. और इसके मुकाबले में दूसरा लफ्ज जो इस्तेमाल होता है वो है डस्क का. वैसे हाँ ये आगे आ रहा है, तब बात करते हैं. नून, 12 o'clock in the midday of the day, middle of the day, यानी midday तक. 12 o'clock in the middle of the day, ये नून है. और इसका बड़ा आप यूं समझ लें कि बस चंद लम्हों का वक्त होता है नून. आफ्टरनून, इसलिए कि 12 बजे और उसके बाद आफ्टरनून शुरू. पार्ट ऑफ द डे फ्रॉम 12 midday until about sunset, सूरज गुरूब होने के वक्त तक, ये आफ्टरनून. और डस्क जो है वो है द टाइम ऑफ द डे when light has almost gone but it is not yet dark. बल्कि मैं यहाँ एक बड़ी दिलचस्प मिसाल आपको और देता हूँ. बाज़ औक़ात पूछा जाता है कि नमाज मगरिब का वक्त कब
तक रहता है, इसका ये जवाब भी दिया जाता है कि ये तब तक है जब तक आप यानी सूरज गुरूब होने के बाद आप काले रंग का धागा कहीं रख दें, तो जब तक वो नजर आता है तब तक नमाज मगरिब का वक्त है। जब वो नजर आना बंद हो जाए यानी डार्क हो जाए तो फिर टाइम खत्म। इवनिंग इसी तरह, द पार्ट ऑफ द डे बिटवीन द आफ्टरनून एंड द टाइम टू गो टू बेड। जब ये जो शाम का वक्त है ये सबसे तवील है जागते हुए, और इसीलिए बड़े शायराना अंदाज में कहा जाता है कि शाम हर शख्स की अपनी होती है, वो कब तक शाम रहती है नहीं मालूम, इसलिए कि ये दोपहर के बाद शुरू होती है यानी नून के बाद, और जब तक आप रात को सो नहीं जाते तब तक आपकी शाम। Let's come to grammar now. That's about countable and uncountable nouns. It's page 64. SLO is number 16. वैसे तो ये ऑनरेबल टीचर इजी सा सब्जेक्ट है। Tell the students that dictionary is the best source to know whether a noun is countable, uncountable, or both, depending on the use. अब इसमें रूल्स में अगर आप पढ़ जाए ना आप उलझ जाएंगे, पेचीदगी बढ़ जाए। डिक्शनरी में आप यकीनन अब तक आदत अपना ली होगी आपने डिक्शनरी की, या खुद अपना ली होगी, कुछ ने उनका शुक्रिया कि मेरे जोर देने पर अपना ली होगी। तो डिक्शनरी में हर लफ्ज, हर रिलेवेंट लफ्ज, सिर्फ नाउन्स भी काउंटेबल या अनकाउंटेबल, उसके आगे सी या यू दोनों में से एक या दोनों लिखे होते हैं। ये काउंटेबल है, इसकी जमा बन सकती है या नहीं बन सकती, या ये काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी है। फ्रूट, द वर्ड फ्रूट फॉर एग्जाम्पल इज बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल फ्रेश फ्रूट, यहाँ फ्रूट्स नहीं आ सकता फ्रेश, और ट्रॉपिकल फ्रूट्स, फिर फ्रूट्स की किस्में उसमें आ जाती। इसी तरह मैं आपको लिखा हुआ तो नहीं है मगर मैं आपको दो एग्जाम्पल्स और बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फिश, आप हमेशा पढ़ते आए हैं कि फिश अनकाउंटेबल नहीं, ऐसा नहीं, ये काउंटेबल तो है ही मगर एक खास सेंस में ये काउंटेबल, आई एम सॉरी, ये अनकाउंटेबल तो है ही मगर एक खास सेंस में काउंटेबल। फिश किस्म के फिश, मगर जब आप when you'll be talking about all the kinds of fish, तो आप फिशेस भी कर सकते हैं। अब इसी तरह पीपल है, पीपल आपने हमेशा पढ़ा होगा, पीपल्स कभी नहीं पढ़ते, लेकिन peoples, when you will be talking about all the nations of the world, you can use the word peoples too. Well, let's come to writing now, describing theme of the poem. It's page 65, that's below 9. Tell the students that theme means the main idea in a talk or piece of writing. जिसका मरकजी ख्याल है वो थीम। Let the students describe the main idea of the poem. Good morning. And then suggest the following by writing on the. बच्चे कोशिश जाहिर करेंगे इस पोएम का थीम लिखने, लिखवाएं उनसे पहले, उनका काम चेक भी कर लें, लेकिन फिर आप अपनी तरफ से भी इंतहाई मुख्तसर इस पोएम का थीम आप बोर्ड पर लिख, ताकि उनको मालूम हो सके अच्छा थीम कैसे लिखा जाता है। मैंने अपनी तरफ से ये सजेस्ट कर दिया है आपको इस पोएम का थीम, although I'm sure you can always write a better theme than I can do. Dawn of the day and fall of the night is the nature's way of life. All the creatures are awake in the morning and get busy. ये है इसका theme. And with this theme, that is all for this tutorial, honorable teacher. Thank you and